first team to whitewash India twice in a test series in India. Yes, the second cricket test match was played at Guwahati, and South Africa won that test match by a comprehensive 408 runs margin, which is the biggest defeat for India in terms of runs. Batting first, South Africa scored 489, and in reply, India scored 201. South Africa took 288 runs per string lead, and capitalizing on that lead, South Africa scored 260 in their second inning and declared at the loss of 5 wickets, setting India a target of 549, and India were all out for 140, thus losing the match by 408. Marco Jansen, what a brilliant performance as an all-rounder, scoring 93 with the bat, 6 for 48 in the first inning and 1 for 23 in the second inning, and also finishing this test match with a brilliant one-handed catch. Player of the series, Simon Harbour, the right-arm off spinner, capturing 17 wickets. But catches win matches, as Aiden Macron has broken the record for most catches by a fielder in a match, which is 9 for South Africa, going past Bert Rogers, who took 6 catches. Aiden Macron has broken the record for most catches by a fielder in Test 9, going past Rahane's 8. So many stats and so many things to be discussed. And going further to, yes, this is South Africa's record from the last 14 test matches. They have won 13, incredible record, won 13 and have lost just one, which is against Pakistan. Okay, South Africa whitewashed India in a test series by defeating them by 408 runs. In the second test, India have now suffered back-to-back home test series whitewashes, first 3-0 against New Zealand and now 2-0 against South Africa. Captain Temba Bavuma leading from the front, leading with calm and class. A proxy captain, South Africa, 2-2 India, whitewashes India, 2-0. India's test team under Gautam Gambhir, they were whitewashed by New Zealand at home, lost the Border Gavaskar Trophy in Australia, lost the 2 matches against England, and now the whitewash against South Africa at home. Three coaches, Ravi Shastri, Rahul Dravid, and now Gautam Gambhir. You can see the stats. Ravi Shastri in 15 test matches, India won 12 matches and have lost just 1, which means Ravi Shastri as a coach has delivered at 80% win percentage and series defeat none, and Ravi Shastri from July 17 to October 21. Then Rahul Dravid from 13 test matches as a coach, India under his coaching won 9 test matches and lost just 2 matches, and his win percentage is 69.2. No series loss, and Rahul Dravid coached India from November 29 to June 24. But here, the latest, the current coach of India, Gautam Gambhir, 9 test matches, and India won just 4 test matches and lost 5 matches. So the win percentage is 44.4 and 2 series lost, Gautam Gambhir from 2024 June till now. Okay, these are the 5 series which India have played recently. They lost to New Zealand 3-0, they lost to Australia 3-1, and they leveled the series against England 2-2, and now they lost this series they won the series against West Indies 2-0, and the latest series, which is against South Africa, and South Africa winning the series 2-0, whitewashing India. India's lost 7 test matches at home. India won only 2 and have lost 5 matches. Real worrying sign for India and World Test Championship update. Pakistan now overtakes India. Pakistan climb up the ladder to number 4 and India slips down to number 5 in the World Test Championship cycle from 2023 to 2025. Okay, whitewashes at home, instances of India getting clean swept in a test series at home. 2-0 in 2000 against South Africa, and Hansi Cronje was the captain of South Africa. And then 3-0 against New Zealand in 2024, and the latest is 2-0 against South Africa in 2025. So summary of the match, South Africa scored 489, in reply India were all out for 201, then South Africa scored 260 for the loss of 5 wickets, declared the second innings, setting India a target of 549 and chasing that target
India were all out for 114, losing the match by 408 runs. Okay, the struggle at home and India in the last test matches under Gautam Gambhir. Yes, they lost to South Africa, won against West Indies 2 matches and lost 3 matches against New Zealand. So, now going back to the scorecard where I can show how India performed. Yes, the scorecard. India was set a target of 549 in the second inning. They were 27 for 2 overnight, needing more than 400 runs, 500 runs, and chasing that total, they were all out for just 140. A bit further, a bit more. Yes. They lost their first wicket of the day, and which is night watchman Kuldeep Yadav in the 24th over, clean bowled by Simon Harmer, and he made only 5 runs. 4 to go. 2 runs later, Dhruv Jurel in the 24th over, and he was out scoring 2 runs, caught by Aiden Markram of the bowling of Simon Harmer. The 5th wicket, 58. Rishabh Pant, the aggressive batsman, was out after scoring only 13, although he hit 1 4 and 1 6 of 16 deliveries, but he was out for 13, caught by Markram once again in the slip of the bowling of Simon Harmer. The 6th wicket at 95. Overnight batsman Sai Sudarshan in the 48th over was out after scoring 14. He faced 139 deliveries and scored only 14 runs. Stayed at the wicket for 159 minutes. It was difficult to bat on. That is why he scored only 14 of 139 balls. And he was out when India was 95 in the 48th over. And then the 7th wicket at 130. Washington Sundar, the all-rounder, departs after scoring 16 of 44 balls. And he was caught by Makram once again in the slip of the bowling of right-arm off spinner Simon Harmer. The 8th wicket at 138, Nitesh Kumar Reddy in the 63rd over, and he was out without scoring. Caught by Carl Varner, the wicket-keeper of the bowling of Simon Harmer, and he faced 3 deliveries. The 9th wicket at 140, Ravindra Jadeja was the 9th man to go, and the only batsman who showed some resistance, scoring a half century, 54 of 87 deliveries. He hit 4 fours and 2 sixes, and he was out after scoring 54. Stumped by Kyle Verna of the bowling of Keshav Maharaj, the left-arm leg spinner. While the 10th and final wicket, the catch of the series, I must say. What a brilliant catch from tall, lanky Marco Jansen, running backward and taking a blinder of a catch. One-handed catch, and the last wicket, and also sealing the series, winning the series 2-0. And Mohammad Siraj was out without scoring. India were bundled out for 140 in 63.5 overs. Now going to the South African bowling attack, Marco Jansen, 15 overs, 7 maiden, 23 runs and 1 wicket, with economy of 1.53. Next is Viram Mulder, 4 overs, 1 maiden, 6 runs and no wicket. Then Simon Harmer, a brilliant bowling performance, a 5-wicket haul, 23 overs, 6 maiden, 37 runs and 6 wicket. And then Keshav Maharaj, 12.5 overs, 1 maiden, 37 runs and 2 wicket. Aiden Markram also bowled 2 overs, and Sanmuran Mathusamy, who scored a century, who set a platform to his bat, bowled 7 overs, 1 maiden, 21 runs and 1 wicket, thus winning the match by 408 runs. And now going into this World Test Championship. Okay, from here. The World Test Championship, points table, South Africa climb up the ladder to number 2 in the ICC World Test Championship. Australia, as we all know, is at the top. They've played 4 matches and have won 4 matches. So their points are 48 and their win percentage is 100. Next is South Africa. They've played 4 matches, won 3 and have lost 1, which is against Pakistan. They have 36 points and they have 75% win percentage. Sri Lanka are at number 3. They have played only 2 matches so far, so they have won 1 and have drawn 1. They have 16 points with 66.67 they win percentage. On the other hand, Pakistan also have played just 2 test matches, winning 1 and losing 1 against South Africa. They have 12 points and their win percentage is 50. Followed by India. Yes, India slipped down from number 2 to number 5, and India now have played 9 matches, the most number of matches in this World Test Championship cycle so far, winning 4 and losing 4, and have drawn 1. They have 52 points
with 48.15%. The table is defined through win percentage, and England are at number 6. England have so far played 6 matches, winning 2 and have lost 3. They've drawn 1 match, they have 26 points, but their win percentage is 36. Then Bangladesh also played 2 matches and have lost 1 and drawn 1, they have 4 points with 16.67 their win percentage, while West Indies have played 5 matches and have lost all the 5 test matches. So they have no points and no win percentage, while New Zealand have yet to play a test match in this World Test Championship cycle. बहुत सारी डिबेट है, बहुत सारी डिस्कशन है, जो अगर हम दोबारा आपको वो सारे स्टैट्स दोबारा से दिखाएं, जिस पे बात हो रही है कि इंडिया के साथ हुआ क्या ये बुकीज का गेम था, क्या था ये कि इंडिया एट होम 27 साल के बाद इंडिया अपने मुल्क में व्हाइट वॉश हो रहा है। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि क्या इंडिया अपने मुल्क में टेस्ट सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हार सकता है, लेकिन हमने देखा कि नहीं, इंडिया को पहले न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी और अब साउथ अफ्रीका की टीम ने शिकस्त दी है। और ये वो सारे स्टैट्स हैं। गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर सवालिया निशान आ गया है। क्रिटिसिज्म इंडिया का सोशल मीडिया इस वक्त चीख पा हो रहा है कि गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं, क्या टीम की कोचिंग कर रहे हैं, कि इंडिया जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री साउथ अफ्रीका से हारती हुई नजर आई है। लेकिन अगर 3 कोचेस का कंपैरिजन कर ली जाए, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर, तो रवि शास्त्री फार बेटर। इन तमाम में सबसे बेहतर आपको रवि शास्त्री नजर आ रहे हैं, जिनका विन परसेंटेज 80 है। 15 में से 12 मैचेस में उनकी कोचिंग के अंडर इंडिया टेस्ट मैच जीता। राहुल द्रविड़ कर दे बेहतर, मैं कहूंगा कि रवि शास्त्री से थोड़ा कम है। 13 मैचेस में 9 में कामयाबी हासिल की। लेकिन गौतम गंभीर क्या कर रहे हैं, 9 में वो कोचिंग कर रहे हैं, सिर्फ 4 टेस्ट मैच इंडिया जीत रहा है और 5 में इंडिया को शिकस्त हो गई। तो यहाँ पे जो विन परसेंटेज है 44% एज कंपेयर टू रवि शास्त्री 80%, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या ये अपनी कोचिंग बरकरार रख पाएंगे, इंडिया में क्या होने जा रहा है, ये सारी चीजें देखने वाली हैं। आगे चलते हैं साहब, और क्या क्या स्टैट्स है। और ये वो आप देख सकते हैं कि लास्ट फाइव जो सीरीज है, इनमें अगर बात कर ली जाए, थोड़ा सा इसको अगर हम ऊपर कर लें, तो इनमें अगर बात कर ली जाए तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड इंडिया लॉस्ट 3-0 व्हिच इज अ व्हाइट वॉश। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो भी इंडिया को शिकस्त दी हुई, 3-1 से इंडिया वहां पे भी हार गया। फिर देखते हैं कि जो इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से इंग्लैंड में इंडिया गई खेलने और वहां पे 2-2 से कामयाबी हासिल होती है। लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो वाहिद सीरीज है जो इंडिया ने जीती। वेस्ट इंडीज वैसे भी आजकल बिल्कुल बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल है, तो 2-0 से इंडिया जीती। और यहाँ पे कहा जाता इनके ऊपर बड़ा, इनकी हाइट के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म था। इवन हमने देखा कि इंडिया के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भी उनको कह रहे थे, और जिस पे उन पर आईसीसी ने स्क्रूटनी भी की, उनको बुलाया, उन पर तंबीह की गई कि आप ये चीजें नहीं बोल सकते। इनके कद के ऊपर कहा जाता कि बोना है, लेग बिफोर हो गया है। लेकिन बहुत सारी चीजें हमने थ्रू माइक, स्टंप्स माइक भी सुनी, ऋषभ पंत क्या कह रहे थे, और उसके बाद उन पे डीमेरिट पॉइंट भी होंगे। ये लास्ट 7 टेस्ट मैचेस हैं इंडिया के, और कोई कह सकता था कि इंडिया 7 में से सिर्फ 2 टेस्ट मैच जीतेगा, क्योंकि अपने मुल्क में खेल रहा है। और ये डिफिकल्टीज इंडिया को अब नजर आ रही है कि जब आप T20 बहुत ज्यादा खेलते हैं और उसी सेट ऑफ प्लेयर्स को टेस्ट मैच खिलाने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल है। टेस्ट मैच टोटली डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, और आपको टेस्ट के स्पेशलिस्ट को खिलाना पड़ेगा। और ये जो एक और डेंट इंडिया को क्या हुआ, एक तो हारी है सीरीज और स्लिप तो हुए, लेकिन स्लिप किससे हुए, पाकिस्तान से नीचे चले गए। जी हाँ, इंडिया 5वें नंबर पे चला गया, पाकिस्तान 4थे नंबर पे आ गया, इंडिया से ऊपर पाकिस्तान आ गया। तो ये भी इंडिया को हजम नहीं हो रहा होगा कि ये क्या हो गया इनके साथ। व्हाइट वॉश, ये जिसका मैंने आपको बताया शुरू में कि ये दुनिया की पहली टीम है जिसने इंडिया को इंडिया में दूसरी मर्तबा व्हाइट वॉश किया। 2000 में हांसी क्रोनी, जी हाँ, ये हांसी, लेट हांसी क्रोनी, इनकी कैप्टनसी में 2-0 हुआ। और फिर न्यूजीलैंड अभी पिछले साल 2024 में 3-0 और 3 टेस्ट मैचेस, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 1 मैच हो गया, 2 हो गया, 3 के 3 टेस्ट मैच न्यूजीलैंड जीत गया। और यहाँ पे आप देख लेना 2-0 पहला टेस्ट मैच हार गए थे, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया बाउंस बैक करेगा, सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी। लेकिन जब 549 का पहाड़ जैसा टोटल सामने आया, तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो होती, लेकिन 140 पे इंडिया ढेर और 408 रन से शिकस्त होनी, ये भी समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। इसलिए थोड़े से कंसर्न्स हैं,
थोड़े से लोग ये सोच रहे हैं कि हो क्या रहा है इंडिया के साथ। आगे चलते हैं ना, और क्या कुछ है हमारे पास। ये समरी वंस अगेन 489 साउथ अफ्रीका स्कोर्ड इन द फर्स्ट इनिंग इन रिप्लाई इंडिया मेड 201। 489 के जवाब में सिर्फ 201 रन बनाती है और 288 रन का खसारा होता है इंडिया को। और उस 288 रन के खसारे में साउथ अफ्रीका 260 रन बनाती है दूसरी इनिंग में 5 विकेटों के नुकसान पे, और इंडिया को 549 रन का हदफ देती है। उस 549 रन के हदफ के ताकुब में इंडिया की टीम सिर्फ 140 रन पे ढेर हो जाती है और इस टाइम मैच में 408 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। गौतम गंभीर जहां बिल्कुल इस वक्त बहुत तनकीद के निशाना बन रहे हैं, और ये उनका वो रिकॉर्ड है अंडर इज कोचिंग लास्ट 7 टेस्ट मैचेस, न्यूजीलैंड से 3-0, ऑल्दो के वेस्ट इंडीज से 2 जीते, लेकिन अब फिर ये रेड लाइन आपको रेड 5 दफा नजर आ रहा है जहां इंडिया की टीम को शिकस्त होती है। तो ये जनाब समरी है सारे टेस्ट मैच की, इस टेस्ट सीरीज की, और इंडिया 5वें नंबर पे चली गई है और बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए कि अगली कौन सी सीरीज आ रही है, अगले किस किस के खिलाफ खेलना है। लेकिन प्रेशर जो है ना इस वक्त, वो प्रेशर कुकर वो फटने वाला है कि इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है। आप शॉर्टर फॉर्मेट खेल लेते हैं, आप वनडे खेल लें, T20 खेल लें, लेकिन टेस्ट मैच जिसको रियल क्रिकेट कहा जाता है वहां आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। दूसरी टीम को हराना, बाहर जाके हराने से ज्यादा अपने ही मुल्क में मैच जीतना उनके लिए अब नामुमकिन सी सूरत हाल हो गई है। कैसे निकल पाएगी इंडिया की टीम, आगे क्या होगा, इसके लिए आप हमारा प्रोग्राम देखते रहे। विशिंग ऑल द टीम बेस्ट ऑफ लक। वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360।